नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सर। आप सभी का आज स्वागत है। 29 सितंबर वार बुधवार, और आज का दिन आप भूलेंगे नहीं, बिकॉज what is going to happen today has capacity to change your lives. Number one, what will happen? And number two, who will make it happen? So, have your seatbelts on. And let's take off this session today, which you will remember for all the rest of the times to come. But as we start each of our meetings with our attitude of gratitude, today also we will start this meeting by saying first thanks to Kingsley Ennis, Sunshine Coast, Australia. Thank you very much, Kingsley, for giving us this opportunity and giving us a reason to meet day after day, week after week, and month after month. Thank you very much. And the very purpose of this meeting today is also a reason to thank Maji, who has perpetually decided to support us with our circle of success and share with us her secrets of success. Despite being so much in demand, supporting a crowd of 3 million people in her organization, generating 60 to 70% business for the company, she is committed to us, despite us not coming to her expectations. Of course, we will be there, maybe a little more time, but we will be there, Maji, we promise you. You keep doing your thing, we'll keep doing our thing, and we'll be definitely there. Amen. All of us. Amen. Thank you very much, Maji, for all you are doing for us. And of course, a huge vote of thanks from all of us to all rest of us for holding our hands together and ensuring that together we rise. None will be left behind. We will all ensure that we all succeed to achieve our dreams and desires on this Modere Express, and we travel in class called Maji class. So thank you very much दोस्तों for being with us. आज आपका यहाँ आना, आज जो कुछ यहाँ होने वाला है, this has got capacity to change your lives. And let me assure, this is the first link in the series of events that will take place, and we will ensure that each of us will become an expert in online promotion of the business, which is creating 90 to 95% of the business of the company on the retail side. So, doston, without losing any more time, please help me welcome Maji Ali Pranti and Hardeep Singh. Our Hardeep Singh, which I say it's God's sent lamp, is always there to ensure that Marji's speech reaches each of us in letter and spirit, so to say. So please help me welcome Maji Ali Pranti and Hardeep Singh. Thank you, Sanjeev. Thank you for always beginning with a beautiful attitude of gratitude. It's the way to live life, and it's definitely the way to excel in business and everything, truly. Secondarily, I am so grateful. Hardeep, thank you for being my voice and my translation. And I'm very excited to see and welcome every single one of you to this training this morning. Hardeep. Thank you, Maji. आप सबका स्वागत कर रही हैं, थैंक यू बोल रही हैं, और इस बात की सराहना कर रही हैं, शलाघा करती हैं कि हम एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड के जरिए हम सबको एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, उनका किया हुआ जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस बड़ी बात से हमारे अंदर की जो भावना है वो व्यक्त होती है कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। तो बिकॉज दिस इज ए हेल्पिंग बिजनेस, सो दीज थिंग्स काउंट। ये चीजें जो हैं उसमें बहुत आपका करेक्टर जो है शो करती हैं। यस माजी, थैंक यू। Thank you, Hardeep. So, my friends, I know that the purpose of this training today is to talk about online building with social media. Before we jump into that topic, I just want to say, in 1 week from today, I will be on my way to you in India.
Now is the time to double down in your invitations to get people to the event. A couple of pieces of advice, please, for you. When you reach out, I want you to take to people, to invite them to the event. I want you to take a very lofty attitude. I want you to tell them that you are co-hosting and bringing an international guest to India, and you want them there to meet me, and also you want them there to support you. Take ownership of the event as though you're the one putting on the whole tour, because guess what? You are. We are co-creating this event. You are co-hosting me in India. So please increase the number of your invitations. Let's not miss this chance to get people in front of me, to feel the emotion, to feel the passion of face to face as we share the vision of Modere. Hardeep. या इससे पहले कि आज की ट्रेनिंग को आगे माजी चलाएं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग या सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देनी है, वो हमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ दे रही है, खुशखबरी देर से इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक मार्जी हमारे बीच में होंगी। 8 तारीख के बाद वो इंडिया का टूर ले रही है 15-20 दिन का। तो उसके लिए आप सबको कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सूचना दीजिए, बताइए कि आप जिस सिटी में वो जा रही हैं उसकी आप ऑनरशिप लीजिए, कि आप वहाँ पे जो मीटिंग्स हैं होस्ट कर रहे हैं, और उसमें अपने स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाया है। मार्जी आ रही है जो कि टॉप लीडर हैं, जो कि फर्स्ट आईडी है कंपनी की, वो आ रही है, उसको उनको प्रमोट कीजिए और ऑनर्स लेके अपने बताइए कि आप मीटिंग करवा रहे हैं, और उनको सुनने के लिए सबको बुलाइए और वो समझेंगे, और उसी से आगे जो आपका बिजनेस बढ़ेगा उसके लिए आप अपनी इनविटेशन बढ़ा दीजिए। जो 5-7 दिन 10 दिन में उस डेट को, जो डेट भी आपके शहर में पड़ती है, वो आपको शेड्यूल जो है कल परसों में आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपने शहर में जहां जहां भी इवेंट होगी आपको उसका एड्रेस भी मिल जाएगा, उसको प्रमोशन करने का शुरू कर लीजिए। जो अगर कुछ कहीं भी कुछ दिक्कत आती है या पूछना है कुछ, आप अपने अपलाइंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू मार्जी। Thank you, Hardeep. Okay, so let's dive into this topic now of social media and how to leverage social media. First of all, let me say that when we started introducing these systems in the United States, I had zero. I was doing so little with Facebook that these were very new strategies for me as well. Just muting a couple more guests to keep it quiet. These were very new strategies for me. And I have delayed sharing this with you for one specific reason. And that is that I don't want you to think this is the only way to do the business. If you are currently using traditional business building methods, you don't want to stop doing what you're doing. You just simply want to gradually learn and implement some of these ad tag message, some of these online strategies. Do it in addition to what you're already doing. Don't get overwhelmed. Don't think this is the only way to do the business, but also don't be blind to how powerful this can be for you. We're setting it up so that you can have incredible success, and I will hold your hand, teach you every step of the way. This is a beginning training this morning, this evening for you. So just hold it as inspiration and don't stop doing what you're already doing. Hardeep. माजी बता रही हैं कि जिस ट्रेनिंग के बारे में आज वो बात करना चाहती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन जो पब्लिसिटी है, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, उसके बारे में बता रही कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके लिए भी ये एकदम नई चीज थी। वो भी बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन इतने सालों में उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल कर ली है। और वो बता रही कि मैं क्यों आपको इतना लेट बता रही हूँ, ऑलरेडी 7-8 महीने हो गए हमारे साथ उनको, क्योंकि वो चाहती थी कि जो हम कर रहे हैं पहले उसको भी साथ में करें। जो ट्रेडिशनल वे है, जो हम पर्सनल हमारी लोगों के साथ टचअप रहता है, जो पर्सनल हमारा रिलेशनशिप बिजनेस है, उसके साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जरूर करें। क्योंकि ये जो ऑनलाइन, ये एक ही तरीका मत समझिए कि उसको छोड़ के आपने ये करना है।
ये एक एडिशनल तरीका है और बहुत कामयाब तरीका है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो सोशल मीडिया का है, तो उसमें ये बहुत वर्कफुल होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको भी जानना। तो उसके लिए ब्लाइंड मत होइए कि ये भी सीखना बहुत जरूरी है। आज से आपका पहला लेसन है, आप जो जो माँ जी को सीखा है वो हमें सिखाएंगी, हमारा हाथ पकड़ेंगी और हमें भी पूरा अपने तरह एक्सपर्ट बनाएंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। यस माँ जी। Okay, so the other thing is Hardeep, you're so dang good. You're so good. Let's just give Hardeep a little applause, please. How does he remember that much stuff, right? He's so good. So the other thing is that years and years ago in my business, I learned that you want to use tools and you want to have systems, because the more that you can rely on a tool that tells the story or a system that teaches you what to do, the better your business will duplicate and the less skill it requires. So ATM that I'm going to teach you today is nothing more than a tool that helps the recruiting process and will increase your duplication, because work and recruitment can happen without you if you use this system. Hardeep. माँ जी बोलिए कि ये जो बिजनेस के टूल्स होते हैं, ये सिस्टम, कोई भी किसी काम को भी करते हैं उसके लिए जो कोई काम करते हैं, औजार जिसको बोलते हैं, लेकिन हमारा मार्केटिंग है तो इसमें जो भी करना है अगर वो हमें पता चल जाए, वो यूज करके हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है, हम जो हम नहीं कर सकते वो भी कर पाते हैं। और ये जो टूल्स हैं इसको सीखने के लिए एटीएम जो इन्होंने नाम दिया है, उसको अभी उसकी डिटेल में अभी हमें बताएंगी। अगर इसको सीख लेंगे तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा कि आप सामने हैं या नहीं है, आपकी मार्केटिंग होती रहेगी और आप बिना आपके सामने, बिना आपका भी हुए आपका काम चलता रहेगा। यस माँ जी। Okay, so we have two groups right now, two Facebook groups that we have created that we want to get you added into so that you can start looking around and experiencing these groups. Let me show you. I hope you can see this diagram. And then I'll tell you a little bit more about the groups. In the US, we have, so let me just show you this. See how this is kind of a triangle with a funnel? At the top of the funnel, we have a group in the United States that is called Modere Healthy Living Community. It has 500,000 people in it. Hardeep. Yeah. माँ जी बता रही हैं जो भी इनका प्रोग्राम है उसके बारे में बता रही हैं कि ऐसे जो फेसबुक के दो अकाउंट हैं जिसके बारे में बताएंगे, जिसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिक बड़े बड़े सीखना मिलेगा और लोगों का पता चलेगा क्या कर रहे हैं। जो ये यूएसए में प्लान आपको फोटो दिखा रही हैं, तीन तरह के उसमें ये जो ग्रुप है वो है। पहला जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में है, जो प्रोडक्ट के बारे जो लोग करना चाहते हैं, जो यूजर्स हैं जो मॉडरेट प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक ग्रुप है। उसके नीचे आपके आगे दो ग्रुपों की बात करेंगे, उसका बता रही है कि प्रोडक्ट वाले यूजर हैं उनका एक ग्रुप है, उसके साथ दूसरा बिजनेस का अटैच्ड है, और तीसरा जो आप देख रहे हैं वो फिर उसके बारे में अभी डिटेल में मार्ची बताएंगी। यस मार्ची। So I think we all know the strength of social proof, social influence. Everything that Modere is doing right now on Facebook, on Instagram, is about leveraging the social influence of individuals, right? When you get added to a group that has almost 500,000 people in it, can you imagine the social proof that this is working? This is working for lots of people. And so to be able to have in one place before and after pictures, testimonials of all of the products, trainings by doctors where people can learn in their own time, in their own way, by tootling around a Facebook group is very, very powerful. So that's the first group. Hardeep?
या उसमें जो पहला ग्रुप है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, जिसके अंदर बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं जो प्रोडक्ट्स के बारे में देते रहते हैं आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर की। और अगर वहां पे कोई 1 मिलियन लोग हैं इस ग्रुप में, और अगर इतने सारे लोग हैं जिस ग्रुप में आप अगर अटैच होते हैं, वहां 40-50 हजार लोग आपको मिलते हैं, वो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है और जान सकते हैं कि वाकई ये चीज काम करती है। वैसे ही जैसे आप किसी सत्संग में या किसी उसमें जाते हैं, जब इतने लोग होते हैं तो आपको लगता है कि वाकई ये बहुत बढ़िया चीज है, तभी तो इतने लोग यहाँ इसके अंदर हैं, इसके अंदर सब कुछ है। तो ये ग्रुप्स करने के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी उन लोगों की बातें सुन के और उनकी टेस्टिमनी सुन के। यस मार्ची। And so then the second step is, Sanjeev, if you could help keep those lines muted. So the next step is that we have a group where people can take a look at the business. In the United States, we call this group Social Retail Live. You add people to this group, you tag them in compensation plan information. In this group is where they see people celebrated for rank advancements. They get to view the community. They see how people are making money. So you have your product group, and then you have your business group where people just observe and learn, making any commitments without having to leave their house, without having to go to a meeting. They can do it in the palm of their hand. So that business group gives people an inside look to how the business works. Hardeep. जो दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, वो आपका बिजनेस ग्रुप है, जिसके अंदर लोग अपनी टेस्टिमोनी बिजनेस के बारे में देते हैं, रैंक एडवांसमेंट के देते हैं, पैसे के बारे में देते हैं, और कैसे वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है, ऐसी टेस्टिमोनीज देते हैं। तो वो आपके लिए, उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में करना चाहते हैं, जो पैसे बनाना चाहते हैं, वो चीजें उसके लिए। तो दो ग्रुप अलग अलग हैं। प्रोडक्ट्स के बाद ये बिजनेस ग्रुप है। ऑफ कोर्स इन्होंने भी प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, तभी तो ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो टेस्टिमोनीज हैं बिजनेस की होंगी, और वहां पे जो मेनली वो प्रोडक्ट्स की होती है पहले ग्रुप में। तो दोनों ग्रुप को समझना जरूरी है। यस माजी। So one more group I'm going to tell you about that we use in the United States, and then I'll tell you what we have for you already set up in India, for India. So the third group is a training group called One Voice. In the US, this is where once somebody says yes to the business, we add them to One Voice. We tag them in a getting started checklist. We tag them in videos about how to recruit, how to train, how to get started, how to create duplication. So all of the training that they need, how to ATM, what posts to use, we do everything for them. So all they have to do is cut and paste. In the US, we call this One Voice. This is the training group. Hardeep. तीसरा ग्रुप जो है वो ट्रेनिंग ग्रुप है, जिसका नाम वन वॉइस रखा है इन्होंने। इसमें सब लोग, ये जो जब भी आप बिजनेस जो भी ज्वाइन कर लेगा, उसको जो ग्रुप में अगर जाते हैं तो जो सिस्टम है यहाँ का, उसको टैग करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो सभी लोग वो पूरी ट्रेनिंग उनको मिलनी शुरू हो जाती है। लिस्ट कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाती हैं, आप उसे लेने लगते हैं। और उसी को आप अगर शेयर टैग वाला सिस्टम चलाएंगे, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को आता ही होगा, फेसबुक जो यूज करते हैं, नहीं तो मार्जिया में सिखाएंगी, उससे बहुत लोगों को इमीडिएट, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑटोमेटिक लोगों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यस माजी। So now for India, let me show you your own group. We've taken the most successful. So individual teams also have their own groups. We've taken the most successful group. We've mapped the information over to India, and we've done something very special. We have combined these two groups so that the exposure to the products and the business is all in one group for you. It is called India, Real People, Real Stories, Real Results. This is how it looks. आप ये देख सकते हैं,
ये इंडिया के लिए हमारे लिए मार्जिन स्टार्ट किया रियल रिजल्ट्स इंडिया ग्रुप, जिसके अंदर यहाँ पे जो रियल स्टोरीज हैं, रियल लोगों के एक्सपीरियंस है, वो सब शेयर होते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों को इन्होंने कंबाइन करके ये ग्रुप हमारे लिए बना दिया है। सभी को इसमें ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सब कुछ इसके अंदर मिलता रहेगा। यस मैम। And so this group has product testimonials, product information. We're adding more and more business testimonials, and we together will co-create this group. We need you in there. We need your stories. We need your testimonial, because as we grow our own body of business and product testimonials, this is where ATM comes in. ATM stands for add. In order to add someone to the group, invite them. You're going to invite them to come into the group. You need to be friends with them. Just keep that in mind. You need to be friends on Facebook with somebody to invite them to the group. But as you add them to the group, you're going to tag them in relevant information that is specifically for them. So then I'll go in a little more details about the M, which stands for message. Add, tag, message. ATM. Cha-ching, cha-ching, cha-ching. This creates money. ATM. Hardeep. So मैं बता रही हैं कि ये जो ग्रुप बन जाएगा, इसमें हम सब ने हिस्सा लेना है। हमारी जो भी टेस्टिमनीज हैं वो भी शेयर करनी है, जो हमारे साथियों की टेस्टिमनीज हैं वो भी शेयर करनी है। तो इसकी नॉलेज, इसका स्फीयर बनाना है। ये पूरा इंडिया का हमारे ग्रुप का है, इंडिविजुअल ग्रुप का है। और दूसरी बात कि जब ये शेयर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको पहले फ्रेंड बनाइए, फिर इसमें ऐड करिए। और सिर्फ टैग का मतलब उनको वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है जो उनकी रेलेवेंस है, उनको चाहिए। अगर वो खाली प्रोडक्ट वाले हैं तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही टैग करेंगे, उनका नाम लिखेंगे तो वही उनको जाएगी। अगर वो बिजनेस भी साथ चाहते हैं तो बिजनेस वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये हमने डिसाइड करना है कि किसको क्या चीज भेजनी है, क्या चीज टैग करके भेजना है। पहले ऐड करिए, फिर टैग करिए, और उसके बाद क्या मैसेज जाना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन टोटल मिला के एटीएम बन जाएगा। एटीएम क्या होता है? जहां आप बटन दबाते हैं और पैसा आता है, मनी कम्स आउट आफ्टर इट। सो दिस एटीएम वी आर क्रिएटिंग नाउ विद द हेल्प ऑफ मार्जी। Yes, Marji. Thank you. Yes. And so let me just show you practically how this could work. Let's say that I'm sitting on an airplane and talking to the person next to me. And while we're talking, they say, I really need to shed 20 pounds. And let's say I'm talking to a guy that wants to shed 20 pounds. So I just say, let's put a pin in that. And when we get on the ground, let's become Facebook friends quickly. You're on Facebook, right? Yes, almost everybody is. Let's become Facebook friends. I might have a solution for you. So then when the plane lands, I quickly send him a friend request. I'm like, I just sent you a friend request. Quickly accept. Then I'm going to add you to a group where people are getting fit, where they're shedding pounds and keeping them off, and I'm going to tag you in relevant information. Then I would go into the real results room in India, and I would look for the story of somebody, a guy that lost 20 pounds, a before and after, and I'm going to tag him in that information. Hardeep. Yeah. I know it's a lot. Thank you, honey. एग्जाम्पल देके समझा रही हैं कि सपोज आप कई जगह यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो बता रही है कि प्लेन में चलो मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा बैठा है जिसको 20 पाउंड यानी कि 10 किलो वजन कम करना है। बातों बातों में उससे बात निकल आती है कि आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन फॉर वेट लॉस, के उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझको वजन कम करना है। वो तो पहले हमने रेपो बनानी है ना। तो देन यू कैन से कि मेरे पास कुछ सोल्यूशंस हैं, तो मैं आपको फेसबुक में आप मेरे फ्रेंड बन जाइए, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। वो आपके फायदे के लिए होगी। तो आप उनका फेसबुक का जो भी ले लीजिए, लिंक ले लीजिए, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे कहती मैं उतरूंगी, मैं उनको इमीडिएटली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी जिसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद उनको अपने ग्रुप में ऐड करेंगी, उस ग्रुप में ऐड करेंगी जहां पे वेट लॉस के बारे में ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में उनको उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिर वो ऐसी टेस्टिमनी के साथ टैग करेंगी जिसने ऑलरेडी
10-15 किलो वजन कम किया है, वो बिफोर एंड आफ्टर की उसकी पिक्चर्स हैं, तो उनको इमीडिएटली वो उसके साथ टैग करके भेजेंगी, तो वो इंप्रेशन होगा और वो आप वाकई आपसे पूछेंगे कि मेरे को भी ये करना है, आई ऑल्सो वांट टू डू इट, प्लीज हेल्प मी। यस माँ जी। I don't know how he does it. We just have to say thank you again. You are a miracle. You're just a freaking miracle. Thank you. And so, my friends, let me just share with you the other group that we're gonna have you get added to. It's called India Elite 3 Group. This is how it looks. India Elite 3 Group. Now, in this group, it's going to teach you everything you need to ATM. It has tons of sample curiosity posts so that you can start posting. Now, don't expect results overnight. And I'm going to teach you a concept here that's very, very important to use when you are posting. But this page is where you will get all the information. This is essentially India's one voice, right? But this is your own private one where we have more information than the company has because we're teaching people these strategies in the details within this Facebook group. Hardeep. या ये जो दूसरा ग्रुप है एलीट 3 ग्रुप, स्पेशली इंडिया के लिए क्रिएट किया गया है, इसके अंदर आपको जो मेन लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो आपको पूरी इस तरह आपको उसके बारे में शिक्षा बताएंगे, आपको सिखाएंगे, उनकी पूरी टेस्टिमनीज हैं, उनके पूरे वेज ऑफ टीचिंग्स हैं, जिसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपना जो हमारी टेस्टिमनी है वो भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा, और कैसे इसको सक्सेसफुली करना है ये टाइम टू टाइम मार्जी हमें सिखाती रहेंगी। यस मार्जी। So when you post on your own Facebook page, one thing that's extremely important is consistency. If you post consistently, people will start to enjoy learning about things in your life and will love hearing your experiences and your inspiration if you share inspirational quotes. Consistency in posting is very, very important. Now, here's the other principle that we do very well at Modere, and that is creating curiosity. Hardeep, I'll pass it to you, then I'll go more in depth on how we create curiosity and why. Hardeep. इसमें जो मार्जी ने भी बताया है कि आप अपनी, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि आप डेली आप पोस्ट करेंगे अपना कुछ ना कुछ, इंस्पिरेशन है, अपने बारे में है, मोडेर के बारे में है, प्रोडक्ट्स के बारे में है, क्योंकि डेली कोई ना कोई मैसेज, जैसे आपने देखा होगा कि डेली हमें गुड मॉर्निंग के मैसेज, ये मैसेज, वो मैसेज हर कोई उठा के देता है, उसकी जगह ये मैसेज देंगे तो लोगों को उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, देखेंगे, उसके अंदर ऐसे मैसेज होने चाहिए जिससे क्यूरियोसिटी जो है वो बने, लोगों को बने कि क्या चीज है, कैसे है, और उसके लिए मोडेर में बहुत अच्छी तरह बताया जाता है कि कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, और क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, दैट इज द थिंग। वो क्यूरियोसिटी बनाएंगे तो लोग अपने आप आपसे उसके बारे में पूछेंगे, जिसकी अब डिटेल में मार्जी अभी हमारे को आगे बताएंगी कि कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। यस मार्जी। So I'm sure you guys have all experienced somebody's Facebook timeline where they're really spammy and they're just always pushing, trying to sell, and they're just obnoxious, really. Imagine that Facebook is like a cocktail party where you're sitting around talking to friends. Imagine if somebody came into the living room, right? I'm making an analogy here. Imagine if you're at a party and somebody came into the living room and they kept saying, buy from me, I have great products. They're not conversing, they're not relating, they're spammy. Buy from me, look over here. Like, imagine if you're at a party and someone keeps yelling from across the room, buy from me, buy from me, buy from me. It's wrong and it puts people off. It will repel people. We want to attract people. Hardeep. Yes.
जी एक एग्जांपल दे रही हैं कि फेसबुक क्या है। ये समझिए कि आप एक ड्राइंग रूम में एक कॉकटेल पार्टी चल रही है, बहुत लोग आए हुए हैं। ऐसे जो फेसबुक है वो भी एक ग्राउंड है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर होता क्या है कि टाइम पे लोग अगर अपना हमेशा सेलिंग की बातें करेंगे कि मेरे से प्रोडक्ट खरीदो, मेरे से प्रोडक्ट खरीदो, तो लोग आपकी पोस्ट नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे आपको पढ़ना। जैसे कि ड्राइंग रूम में अगर सब लोग बैठे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, एक लेडी जब कोई भी अपना शाउट करके बोल रहा है मेरे से खरीदो, मेरा सामान बहुत बढ़िया है, ये ले लो, ये ले लो, खरीद लो, तो कोई भी उससे उसकी बात नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन उसमें आपको ऐसा करना है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लोग आपकी बातें सुने। वो क्या बातें होनी चाहिए उसके बारे में माँ जी बताएंगे। यस माँ जी। And so the number one reason that we use create curiosity as the way we do it at Modere is because we want to be elegant. We want to be respectful. We want to build relationships. We don't want to spam people. That's number one. But then the other reason that we create curiosity is because we don't want to use the company name or even the product name, because we don't want people to go Google search it and buy it from someone else. We want them to come to us. So if we say, buy my trim, buy my trim, buy my trim, buy my trim, then people will go, trim looks like a good product. They Google search trim and maybe they go buy it from somebody else. We don't want that. So when you create curiosity instead, what you might show is you taking your coconut lime trim with a spoon and say, wow, love my belly fat. But then somebody whose curiosity gets piqued will reach out to you and say, belly fat buster, tell me more. Now you have them. And you don't give them the answer right there. You say, I will DM you. I will personally message you the details, right? Because you want to cultivate that relationship. You want to make that sale. You don't want somebody else making your sale. Hardeep. क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के दो रीजन है। एक तो कि हम क्यूरियोसिटी ऐसी क्रिएट करेंगे लोग अपने आप पूछें, हम लोग उनको कोई जबरदस्ती चीज नहीं देना चाहते, हम अपनी जो डिग्निटी है उसको कायम रखना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि हम कोई ना तो कंपनी का नाम लेना चाहते हैं ना प्रोडक्ट का नाम लेके उसको मशहूरी करें। क्यों? रीजन है कि अगर हम बोल देंगे कि मैं ट्रिम से पतले हुए, मैं इससे पतले, लोग ट्रिम का नाम सोच के ऑनलाइन सर्च करेंगे और वहां पे उनको अच्छा लगेगा तो वो किसी से भी बाय कर लेंगे। तो मेहनत आपकी हुई और कोई फायदा कोई ले गया। इसी तरह कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इस ऐसे क्रिएशन करिए कि लोग आप ही से पूछें। जैसे कि आप उनके सामने एक चम्मच में अपना लाइम फ्लेवर या कोकोनट लाइम फ्लेवर कोई भी ट्रिम जो अगर सुबह लेते हैं तो साथ में अपना बोलिए कि दिस गोज माय फैट, ये खाने से बेली फैट गई, दिस इज माय टुडेज डोज टू एंड माय बेली फैट। ऐसा कोई क्रिएट करिए डॉलर, तो लोग पूछेंगे ये बेली फैट बस्टर है क्या चीज है, प्लीज टेल मी। तो आप उन्हें बोलिए कि यस आई विल टेल यू बट ऑन योर पर्सनल मैसेज, नॉट पब्लिकली, राइट। सो ये उनका कहने का तरीका है। यस मार्टी। Perfect. And so, my friends, here's how. Notice this right here. See how you can see invite? This is the button that you push to invite people. In this Elite 3 group, you will find samples of curiosity posts, so you don't even have to think of them yourself. You just take the curiosity posts and modify them and start using them on your own Facebook timeline. Now, you invite people, they have to accept the invitation. Then you can tag them. So what I want to see over the next week is hundreds of people added to both of these groups. I will make sure that Ashley Roberts sends you the links so you can start adding people, and then we will create our own system with our own groups. Hardeep. Yes. मजीद ने बता रही है जो एलीट 3 ग्रुप है वहां पे एक बटन है इनवाइट करने का। जब आप वहां इनवाइट करेंगी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वहां पे आप उनको अपनी पोस्ट भेज सकती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि जो क्यूरियोसिटी वाले टिप्स हैं या क्यूरियोसिटी में क्या बोलना है, आपको वहां पे हजारों ऐसे लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी जो एलीट लोग ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप उसे सुन के उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से
वो एक वीडियो बना के लोगों को, जो आपके लोग हैं उनको आप भेज सकती हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं, उनको इनवाइट करके उनको दिखा सकती हैं। और इसके लिए माँ जी अभी आप ये जो लिंक्स हैं इनके, ये आपको भिजवा देंगी, सेंड करेंगी थ्रू योर लीडर्स, सबके जो मेन की लीडर्स हैं उनके थ्रू आपको मिल जाएंगे। आप सब लोग इसमें ज्वाइन कीजिए और वहां पे लोग देखिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए कैसे कर रहे हैं, कैसे वो ट्वीट करते हैं, कैसे वो जो अपनी क्यूरियोसिटी वाली जो वीडियोस या मैसेजेस हैं पोस्ट कर रहे हैं, उसी को आप अपनी भाषा में, अपने लहजे में या उसमें कुछ चेंजेस करके आप भी उसको यूज कर सकते हैं। यस माँ जी। So can you imagine, as you begin to create this system, that business does begin to happen without you a little bit? This is everybody's dream. So imagine that many of the social marketers in the United States are adding 20 or 25 people to these ATM groups every day. Imagine over time how sometimes 6 months later, somebody who's been marinating in the group will reach out to you and say, I'm ready to buy, because they're seeing new testimonials. It just is such a slick and beautiful way to introduce the products and the business in a completely non-confrontive way. People can be in their bathrobe at home learning about your business and your products in a completely comfortable environment for themselves. And over time, it builds up until it becomes a machine for recruiting, prospecting, and training your business. Hardeep. Yes. यही चीजें आप जब लोगों को भेजेंगे, बार बार भेजेंगे, रूटीन में रखेंगे, तो लोग उसको सुनेंगे, देखेंगे और अल्टीमेटली उनका भी दिल करेगा कि आप वो भी ये ट्राई करें। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी भी आपको आके बोल सकते हैं कि यस आई वांट टू आल्सो ज्वाइन, आई आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस। ये टाइम लगेगा, लेकिन ये बात है कि वो कभी भी भेजें, आप कभी भी देख सकते हैं, चाहे वो नहाते टाइम, नहाने के बाद, टॉयलेट में, कहीं भी बैठे हैं, अपने एटमोसफियर में आपकी वो पोस्ट देख रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, आपके बारे प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं अपने इजी टाइम में, तो एक किस्म की पब्लिसिटी हो रही है। वो कभी भी आपको वापस लोग मिल सकते हैं और आपका बिजनेस बढ़ सकता है। धीरे 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 इट विल एक्सप्लोड। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। यस माँ जी। So here are your instructions to start learning about this system. First of all, we need to get all of you added to those two groups. You can either get added and start inviting your team, send them an invitation. Let's get everybody in these groups. Then you're going to start looking at the assets or the before and afters, everything. Start becoming familiar with the stories that you now have at your fingertips in the Real Results Room, India. Then I would recommend that you say to a couple of really close friends, hey, I want to practice a new system on you. May I add you to a group of health conscious people where you can learn about products that can make a difference in your life? Can I add you to this group? I'm expanding my social media building and I just want to try it. And will you be my guinea pig, essentially? Hardeep. तो सबसे पहली सेक्शन ये है कि आप इन दोनों को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने लोगों को उसमें थ्रू इनवाइट करके उनको भी ज्वाइन करवाइए और ये ऑब्जर्व कीजिए, टेस्टिमनीज देखिए, उनकी वीडियोस देखिए और आपके वो सारी चीजें इन फिंगर टिप्स आ जाएंगी, याद हो जाएंगे आपको। बार बार जब देखेंगे उनके नाम भी याद हो जाएंगे, कैसे लोगों को बताना है। उसके बाद जो ऑनलाइन तो करना वो तो है ही है, लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हैं, उनसे पूछिए कि मैं एक ऐसा ग्रुप के साथ ज्वाइन किया जहाँ पे हेल्थ के बारे में डिस्कशन होती है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन होती है, क्या उसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, क्या मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ, अपने कर सकता हूँ। आप उनको अपने ग्रुप में उनको इनवाइट करके अपने ग्रुप में ऐड कीजिए। तो इसी तरह वन बाय वन, चाहे वो आपके लिए आएंगे, चाहे उनको पता नहीं उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन जब वो चीजें देखेंगे अपने आप उनको लगेगा कि ये मेरे लिए भी है। लेकिन आपको वो आपकी कामयाबी लिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है, अपने फ्रेंड्स हैं तो मिलेंगे, मना नहीं करेंगे। क्योंकि फेसबुक है, फ्रेंड्स बनने में या उसमें इन्विटेशन में क्या जाएगा उनका,
लेकिन ये एक तरीका है उनको लिसनर बनाने का, उनको एक कोई चीज दिखाने का आपके पास एक मौका है. यस मच. And so this is just a very beginning training. And I want you to start experiencing it a little bit. In the US, one of the phrases we have is we tell people to ATM your face off, meaning ATM, 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 day and night, ATM. And many of the top leaders set themselves a goal of how many people they would ATM every day. And they will not put their head down on the pillow at night until they have ATM'd a certain number of people. So just start. You can start small. Many of the leaders here try to ATM 25 people a day. Start small. Just get familiar with the information that you have there at your fingertips, and let's do this now. Hardeep. मैडम बता रही हैं कि वहां पे अमेरिका में एक कहने का तरीका है, जब भी मीटिंग्स होती हैं, जब भी कोई सेमिनार होता है, तो सब पूछते हैं कि एटीएम करो, एटीएम करो, एटीएम कितने लोगों ने किया, जितनी ज्यादा एटीएम करोगे उतनी ज्यादा. जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन करो, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन करो, तो उसमें हमारे को करनी पड़ती है, लोगों को सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है. लेकिन एटीएम करने के लिए आपको किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं. ऑडियंस बन जाएगी, सुनेंगे अपने आप को. आपने उनको टैग करना है, वो सीखना है. सिर्फ आप उसमें एक बना लीजिए कि मेरे को रोज के कितने एटीएम करने हैं सोने से पहले, मतलब कितने लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है, 5, 10, 15. वहां पे बता रहे कि रोज के 20, 25 लोगों को, कम से कम नए लोगों को डेली लोग एटीएम करते हैं, तो उनका बिजनेस जो है इमीडिएटली धीरे धीरे बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है. तो एक वे ऑफ मार्केटिंग है, वे ऑफ तरीका है, नया तरीका है एटीएम. ठीक है जी. आप और आगे क्या बताती हैं, सुनते हैं. यस मार जी. And so, my friends, make sure that you also, in the real results room, you want to add all of your customers. Imagine how this helps with retention when people are using the products and they're seeing the results everyone else is getting. So we want to start adding to the stories, creating more stories, more success. So start getting your people that have had success with the products. Let's get their stories. Let's add your customers so that it can help you with retention. And with this, I'm going to close the meeting now, hand it back to Hardeep, and then we will hand it back to Sanjeev. This is the beginning. Yes. माजी कह रही है कि इसी तरह जितने भी आपके कस्टमर्स भी हैं उनको भी ऐड करना मत भूलिएगा. जो प्रोडक्ट यूज करने ले लिए, उन्हें लव कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको नई नई टेस्टिमनी देखने को मिलेंगी, उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो रीपरचेज करेंगे. कई बार उनके रिजल्ट स्लो होते हैं, लेकिन दूसरों के देख के, दूसरों की टेस्टिमनी सुन के वो इसको प्रोडक्ट्स को दोबारा से यूज करेंगे, लेंगे. तो उसमें आपका फायदा होगा. और इसके ऊपर आप शुरुआत कर दीजिए. और इसका आज का जो ट्रेनिंग है यही तक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मार जी, आपने इतना अच्छा हमें समझाया. और अभी बैक टू संजीव जी. संजीव जी का थोड़ा इसमें ऐड कीजिए, जो मेरे से रह गया है वो आप इसको और ज्यादा एलेबोरेट कर दीजिए. संजीव गुप्ता जी, हैदराबाद. थैंक यू वेरी मच मारजी. हरदीप जी, थैंक यू वेरी मच. हरदीप जी, आप रियली बहुत बार बोला है, मारजी ने भी बोला है, और मैं एक बार फिर हाथ जोड़े जोड़े आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं. आप इतने अच्छे तरीके से सरल शब्दों में मारजी के शब्दों को सबके समझने लायक बनाते हैं. और ये जो आज एटीएम का सब्जेक्ट मारजी ने शुरू किया है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए इन रियल टर्म्स एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ये एक्रोनिम है, add, tag and message. But this technology is also in software terms, say automatic teller machine in our Modere terms. और दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है तो बहुत सुना होगा, लेकिन जर्नी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है ठीक से. अभी जब हम सभी इन ग्रुप्स के मेंबर बन जाएंगे, आप मालूम है दोस्तों क्या होने वाला है? We are all going to help build each other's business. This is the most important thing, the power that is. आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, तिनकों वाली,
जब छोटी छोटी तिनकियां बैठे बैठे आप तोड़ते रहते हैं तो वो तिनके टूटते रहते हैं और बिखरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन तिनकों को आप एक बंडल में बना के गट्ठर बना देते हैं, तोड़ नहीं सकते आप। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स रेलेवेंस। हमारा जो एक नारा है, टुगेदर वी राइज, ये उसी कड़ी में एक हमारा एटीएम है। लेट अस ऑल कम ऑन दिस ग्रुप, all the groups, 3 groups. Unmute yourselves. Everybody unmute. Here we go. Unmute, unmute, unmute. Yes, Please, yes, सब yes, अपने को yes. unmute कर लीजिए। Here we go. There we go. I see everybody. Good. Show up. Show us your face if you can. If not, at least unmute. Let's go. हरप्रीत कौर जी, केविन, परमजीत कौर जी, प्रताप भाई, सब अपने को unmute करो। Hello, Because Sandeep. Good to see you. we are going to repeat now Sonia. our promise with one more additional attribute के हम सब इस फेसबुक ग्रुप्स में ऐड करेंगे। अगर हम फेसबुक पर नहीं है तो अपना फेसबुक पेज बनाएंगे और फेसबुक पेज पे आएंगे और हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे बिजनेस एक दूसरे का बढ़ाने में। Yes, So, yes, yes. before we go today, thank you, Maji, very much for starting this journey along with the ATM on the Thank you so trail. much, ma'am. Thank you so much. I love you. You are so welcome. You're so You know welcome. what has happened today? Margie has established the automatic teller machine on Modere Express itself. Yeah, baby. Here we go. Thank you, Margie. Thank you very much. Thank you. And Thank you. दोस्तों, together we फ्राइडे तक के लिए दोबारा हम आपसे विदा लेते हैं। टुगेदर वी राइज, Together we rise. टुगेदर वी राइज। Until Friday evening. Good night, दोस्तों। Ciao, अलविदा, bye. I'll see you in a week. I love you. I love you.